So yesterday we covered this few sections like YAML and JSON understanding, microservices concepts, and also bit understand REST and SOAP services. So as I explained yesterday, I will also use Hindi bit because yesterday as a feedback I got it कि also थोड़ा बहुत हिंदी भी बोलिए session में because our few folks belong to some areas where they are grooming and कम्युनिकेशन स्किल्स सो उनके लिए बेनिफिट रहेगा एटलीस्ट समझने के लिए सो आई विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स and but also for those people who belongs from other places where they having a difficulties regarding to understanding hindi so I will completely cover the topic in english so english में topic पूरा cover रहेगा हिंदी में adds on रहेगा ताकि उन बच्चों को भी समझ में आ जाए जो स्पेशली अभी they are in a way to able to get properly in English. So I will take care of that part. So I will just again do some revise like कल हमने बात किया था कंज्यूमर एंड प्रोवाइडर पर्सपेक्टिव से कि इसमें कंज्यूमर और प्रोवाइडर क्या रहेगा तो यू कैन सी दिस लेफ्ट साइड वेयर माय कर्सर इज मूविंग जहाँ सो ये बेसिकली सर्वर साइड है और ये प्रोवाइडर रहेगा और जो भी मोबाइल एप्स या डेस्कटॉप्स हैं वो जो भी एप्लीकेशन है वो कंज्यूमर रहेंगे एंड विद इन एपीआई इट्स एन इंटरफेस जो कि इनके बीच में एक इंटरफेस रहेगा टू एक्सेस दिस सर्वर डेटाबेस और एप्लीकेशन डेटाबेस इंफॉर्मेशन ये सेम लाइक है कि जैसे आप अपने घर के सामने एक गेट लगाते हैं यू पुट अ गेट टू इंटर विद इन अ बिल्डिंग अगर आपको किसी घर के अंदर इंटर करना है तो आपने एक गेट लगा दिया तो इट वर्क्स एज एन गेट फॉर द अदर सिस्टम्स हु वांट टू गेट अ इंफॉर्मेशन फॉर एप्लीकेशन सर्वर आई होप इट्स अ बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड एवरीवन सो ये मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए चल रहा हूँ यामल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया यस्टरडे कि Yes, sir. यामल का क्या पर्पज है क्या नहीं है तो यामल अगेन इट्स एन स्पेसिफिकेशन फॉर एपीआईज दैट्स अ वन लाइन आंसर फॉर द यामल क्योंकि बेसिकली अगेन आई मतलब मैं कल के पूरा रिवाइज नहीं कर रहा हूँ जस्ट कुछ सम हेड्स अप दे रहा हूँ स्टिल सम folks आर ज्वाइनिंग जस्ट वन सेकंड या यस ये यामल का एक एग्जांपल था जिसमें एम्प्लॉय और उसकी पे स्लिप्स वगैरह कैसे बेसिकली यामल में मेंटेन करते हैं या लिखते हैं ये पार्ट था जेसन आई आल्सो एक्सप्लेन व्हाट इज द पर्पस ऑफ जेसन व्हाई इट यूज इट and why it's basically a very popular for the REST API. In one line, can someone just put in a chat? I'm moving my आगे बढ़ रहा हूँ, but can someone just put in a chat like what is the JSON? Why it's you just one line, not in like three, four, five line. What do you understand from a JSON? आप जेसन से क्या समझते हो जस्ट आप एक लाइन अगर चैट में आंसर करोगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी टू गेट टू नो एग्जैक्टली डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट बिकॉज आज पूरा जो कन्वर्सेशन है वो सराउंडिंग पार्ट जेसन ही रहेगा एपीआईज पे क्या काम करना है नहीं करना है एक्सेट्रा तो गाइस यू मे स्टार्ट पुटिंग इन ऑन चैट इन मीन टाइम आई एम फॉलोइंग इट सो फिर यार नेक्स्ट पार्ट ये था कि यामल टू जेसन कैसे कन्वर्ट करते हैं तो ये जैसे यामल फाइल हुआ इसका जेसन आइटम्स कैसे बनता है ये पार्ट हुआ अगेन जेसन हम यूज करेंगे रेस्ट एपीआईज में रिक्वेस्ट रिस्पांस के लिए टू कीप इन दैट थॉट है दिस वाज अ सिंपल डेफिनेशन और फिर हम रेस्ट के मेथड्स के बारे में बात किए थे गेट पोस्ट पुट और डिलीट और डिस्कस किए थे कि हम आज इस पे बेसिकली प्रैक्टिकल्स वी विल सी सम लाइव एग्जांपल so today we are going to that part along with the microservices so in our agenda like for today we will discuss this about this REST APIs how it work along with the microservices and the postman so these few things we will cover in our today topic
तो अगेन लाइक गेट होता है टू रिट्रीव अ रिकॉर्ड, पोस्ट टू क्रिएट अ रिकॉर्ड, ह्यूमन टू इंसर्ट इट, अपडेट मतलब अपडेट टू रिकॉर्ड एंड डिलीट टू डिलीट अ रिकॉर्ड, which are really very straightforward. सोप में मैंने बताया था कि रेस्ट और सोप में क्या बेसिक डिफरेंस है. बेसिकली सोप यूज्ड XML and REST use JSON and any other format like text, HTML, any other format you can use. SOAP काफी heavy weight है and REST is a very light weight. Still SOAP are robust, but जितनी भी robustness की चीजें थी, security and powerful feature that also come into REST, and that's why REST becomes very much popular. Guys, I'm okay with speed, right? I mean, आपको speed के साथ कोई problem नहीं हो रही है ना? Or I'm going very fast or very slow? Okay. And tell me also if you're not able to understand any line, so particularly you can put in your chat. I will take care of. So ये soap की conversation हुई थी. Then we discuss about soap messages. How exactly soap messages? So मैंने आपको बताया था जैसे still आपको imply ID भेजनी है for a get to get a records of particular this employee. So इसकी जो particular request जाएगी one system to another system, it will be traverse like in that way. आपका request का format ये रहेगा. Same like a post office का मैंने example दिया था कि within an envelope you put your card a letter which is a part of body, and within body that will be a message. दिस इज विदाउट अ सिक्योरिटी पार्ट, इट्स जस्ट लाइक अ सिंपल मैसेज. मतलब ऐसे ही जैसे आपका गेट ओपन है, कोई आ जा सके, कोई सामान वाला आया अपना सामान लेके आ गया, तो उसका फॉर्मेट ऐसे रहेगा. देन वी लास्ट डिस्कस दैट कि हाँ हम बेसिकली एपीआई कैसे है, उसकी डॉक्यूमेंट कैसे है. एक मैंने सैंपल भी दिखाया था गिटहब यूजर्स का कि कैसे आप बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑल यूजर्स पाएंगे और कैसे आप पर्टिकुलर यूजर्स के डिटेल्स पाएंगे. तो आई ऑल्सो कवर्ड दीज थिंग्स इन आवर यस्टरडे पार्ट. एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट कि व्हाट आर द स्टेटस कोड, कि अगर सक्सेसफुल आता है, इफ यू आर गेटिंग सक्सेसफुली डूइंग योर ऑपरेशंस, suppose like that if you are delivery boy and deliver your foods properly at a home, so you will get 200. If there is some concern like that, okay, gate are not open or you are not getting access, or you saw that okay people are not authenticated to receive your baggage, so you will get in 401 something like 304 which is not modified. I mean you are, it's more like that कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. You are going for update but you can't able to modify that data. So I mean these are that simple request and response. We also discuss about that okay we didn't capture 500 series 5xx. If server is down then you will get, suppose you are going to deliver at a home but nobody at a home, so what you will get in a response, you will get 503 or 500 series of response that server is down. So yesterday we covered this topic. Now we are going to discuss this part today, API exercise. Or I asked that some of you guys, let's see that, let's take from chat now that what did you understand from JSON? I get from a Lakshya. Lakshya is, JSON is a medium of data representation which can be used for further for different kind of application through the API mode. Lakshya, you put contents properly, but actually it's quite complex to understand it. So for API perspective, definitely JSON are getting used, but not for API. It's a part of our medium of data transfer or representation. That's also very good. But the main purpose or main why it's become very popular because it's very lightweight and very efficient between travel from one network to another travel. So you put a very right and proper content. Uh, I got it that you understand properly. Well done, Lakshya. And I didn't get answer from anyone else, so not sure like that whether still those guys are able to get properly understand JSON or not. Yeah, Archana, extend data and medium of convenience to platform. Yeah, well done, Archana.
Okay, so we can start this by today. One funny thing I can let you know by today, कि actually I'm from Europe and taking this session from Europe, Amsterdam, Netherlands. So basically today there is a time difference. यूरोप में क्या होता है कि they started daylight saving. So हमेशा अक्टूबर विंटर में और मार्च में they change the 1 hour of difference because of daylight saving. So I woke up early morning and started this session an hour ago. क्योंकि बेसिकली इंडिया से और यहाँ पे 4.5 घंटे का डिफरेंस है. बट अभी वो आज से 3.5 घंटे का डिफरेंस है. इट विल बी टिल अक्टूबर फॉर नेक्स्ट 5-6 मंथ. सो देन आई गेट टू नो ओके टुडे इज अ डे लाइट सेविंग. दैट्स व्हाई आज मेरे टोटल आवर्स में 1 आवर्स मुझे दिन का एक्स्ट्रा मिला है बिकॉज दे चेंज द टाइम जोन. Basically we call CET to CEST, Central European Summer Time Zone. So ये एक चेंजेस था. Okay guys, shall we start or regarding further proceeding of API testing? Give me a second. Are you able to see this Postman tools? Let me share entire screen because I want to share you few more things. So let me share my entire window, entire screen. So now you can able to see my entire window now. Identity stop process listening conferring the port. Just 1 minute. Yeah. So I hope everyone able to see my screen. So we will start and see that this part on API testing as I explain you in our yesterday class. Where exactly it's gone? This part. So we will going to be test. Basically now slowly we started our testing. So आज हम basically सारे REST के methods को test करेंगे, verify करेंगे. And also today we will understand microservices कि microservices क्या है, इसका useful क्या है, importance क्या है, drawbacks क्या है. We will understand these things and why it's very important at the moment in a market and also equally important for your next job or for your next application and our next project. So microservice के concepts सुनेंगे. In next session, I mean in next weekend जो कि हमारी session है Saturday and Sunday, I send invite to everyone. But अगर कोई miss है तो he can put his name or her name into chat. I will send invite to that particular person as well. उसमें हम बेसिकली वी स्टार्ट टू लर्निंग अ फ्रेमवर्क टू राइट अ रिग्रेशन टेस्ट सूट. जो भी आज हम मैनुअल ऑपरेशन कर रहे हैं उसको ऑटोमेट कैसे करेंगे. तो वो हमारे नेक्स्ट वीकेंड के सेशन में रहेगा. आज पर्टिकुलरली वी आर गोइंग टू बी टेस्ट रेस्ट एपीआईज एंड माइक्रो सर्विसेज. नॉट टेस्ट माइक्रो सर्विसेज, टू टेस्ट रेस्ट एपीआईज एंड अंडरस्टैंड माइक्रो सर्विसेज. सो ये सारे हम ऑपरेशंस करके देखेंगे. जस्ट फॉर एन एग्जांपल हियर, आर यू एबल टू सी दिस पीपीटी
and my postman as well. Please put in a chat because I'm not sure whether particular things has been shared or not. So put able to chat if you are able YRN if you are able to see my this PPT and this postman tools as well. Can you quickly put in a chat yes or no so that I can aware? Okay, fine. So basically we already have a sample application. For your access, we will share it soon. We will deploy in a cloud and we'll share you with you. अभी ये हमारे लोकल पे है. हम इसको रिसेंटली क्लाउड पे डिप्लॉय करके बिकॉज जब आपको ऑटोमेशन टेस्ट सूट लिखना है तो ये एप्लीकेशन आपको एक्सेसिबल रहनी चाहिए. तो अभी आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है बिकॉज यू आर नॉट पर्टिकुलरली हैव बीन मूव्ड फॉर इंटर्नशिप प्रोग्राम. अभी यू आर पार्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम. इंटर्नशिप के बंदे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो उनको वो एक्सेस मिल जाता है. So that's why I run this application from my local system and explaining to you. So concepts में कोई दिक्कत नहीं है. Just for you like that could be from next week. Once you start the automation test job, you may also able to do the testing regarding this API. So we will start with that get to retrieve a record. So for get method, uh, can tell me which method, which REST method it will use to retrieve a record. Get yes, thanks. How many time the same? Archana, any problem with you? Because I'm getting notification always from you. Okay. Thanks. I got a get method. So let's go from here. From this part, you use get, and this is like our API. This is basically we call it endpoints. So basically, we develop a application of tutorials, and we make our endpoint like that API slash tutorials. And when I will call this one, you can able to see I'm getting this JSON response. That's why I told you why JSON is important. So you can see at ID2, there's a IT developer, I take it developer training, ID3, I take it developer training, IT developer 1, I put an IT developer training. You can see there's a published, it's published false or unpublished is true. So basically, also you have to understand a data type, which I explained yesterday. कि जो भी यहाँ पे न्यूमेरिक रहेगा इट विल बी कॉल्ड इंटीजर. जो भी विद इन कोटेशन के Yes, sir. अंदर रहेगा दिस वी विल कॉल स्ट्रिंग. आई डिडंट टेल यू वन थिंग अबाउट बुलियन कि जो भी हमारी बुलियन होती है वो ट्रू एंड फॉल्स होती है. दैट्स व्हाई इट्स पब्लिश्ड और नॉट इट्स फॉल्स. सो इट मींस इट्स अ बुलियन. सो फॉर नाउ यू कैन सी. Okay. Can anyone tell what does mean of this big bit bracket? I mean, why this is not just coming in the curly braces like this way? Why it's let me copy into Notepad plus plus because that's an interesting thing. And I'm also taking care of very basic thing as well. तो आप ये बताओ कि ये जो आप बिग ब्रैकेट देख रहे हो, why everything is there? What does it mean of? Why this response come into in a big bracket? Why just not like that? What does it mean of? Can anyone just explain in one line if are put into chat? Okay, so इसका मतलब ये होता है when you have a list of record, have you seen that array list or arrays as well? Array list or any list. So when you have returning a list, you will get a response like that. So everything in a bracket it comes like an you have list of records means multiple records. Simple understanding ये कि अगर आप शॉप पे जाते हो, आपको एक सामान लेना है, आप जाते हो हाथ में लेके चले आते हो. बट आपको जब बहुत ज्यादा सामान लेने होते हैं तब आप एक बास्केट लेके जाते हो और उसमें रखते हो. तो बास्केट इज लाइक एन लिस्ट विच होल्ड मेनी रिकॉर्ड्स.
और उसके आगे बहुत एडवांस डिफिनेशन है और बेसिक डिफिनेशन भी है कि वो रिकॉर्ड सिमिलर टाइप होने चाहिए या डिफरेंट टाइप होने चाहिए, डिपेंड अपॉन विच काइंड ऑफ बास्केट यू आर टेकिंग, विच काइंड ऑफ डेटा लिस्ट यू आर टेकिंग ऑफ। तो ये उसके ऊपर है, बट एट द बेसिक थॉट आई थॉट टू एक्सप्लेन यू that ki why this is a big bracket, because this is required to understand when you write automation test कि अगर आप यहाँ पे normal string लोगे to retrieve this record, it will be not, you will not able to get all the record because this is returning either arrays or array list, so you have to take care of that any kind of list to receive this value. So we are coming back again. We started from get method. You can see you don't have, this is a body, so I'm coming to postman basic. बेसिकली आपको यहाँ पे कौन सी मेथड है आप वो यूज करोगे, आपकी एपीआई की इन पॉइंट क्या है वो यूज करोगे, देयर इज नथिंग। जो बिलो सेक्शन है, ये जो पार्ट है ये रिस्पांस का पार्ट है। आप जो यहाँ से देख रहे हो बॉडी के ऊपर से, जहाँ से मैं माउस कर्सर अपना मूव कर रहा हूँ, ये आपका रिस्पांस का पार्ट है। इसके अंदर हेडर्स भी होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। फॉर नाउ हेडर्स में आप कंटेंट टाइप भेज रहे हो कि आपकी बेसिकली किस फॉर्मेट में आपका रिक्वेस्ट और रिस्पांस एक्सेस हो रहा है, मतलब किस फॉर्मेट को आप एक्सेस कर रहे हो। तो यू कैन सी दैट हम जेसन की रिस्पांस पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी आर यूजिंग दैट एप्लीकेशन स्लैश जेसन, कि जो एप्लीकेशन है उसको जेसन में हैंडल करे। इन बॉडी गेट में कोई बॉडी नहीं होती है। स्टडी आई एक्सप्लेन यू कि बॉडी हमें बाकी अदर ऑपरेशन, जब हमें कुछ इंसर्ट करना हो तभी एक्सेस होगा। आपको जाना है दुकान से सामान लाना है तो आप जाओगे खाली या सामान लेके चले आओगे, पर अगर आपको दुकान में कुछ सामान रखने जाना हो तो आप कुछ सामान लेके जाओगे, दैट वी कॉल्ड अ बॉडी। सो ये चीज हो गई। अगर आप देखोगे फ्रॉम डेटाबेस पार्ट यू हैव टू बी आल्सो वेरीफाई इट। सो दिस वी कॉल्ड, दिस इज H2 डेटाबेस। H2 डेटाबेस ऐसा समझ लो कि ये इन मेमोरी डेटाबेस है, कोई फिजिकल डेटाबेस नहीं है। जब तक सिस्टम रन कर रहा है ये एग्जिस्टेंस है। जैसे ही मैं सिस्टम स्टॉप करूंगा डेटाबेस विल बी गॉन अगेन, जैसे मैं स्टार्ट करूंगा डेटाबेस विल बी अवेलेबल। तो ये इन मेमोरी डेटाबेस है। इसको हम H2 डेटाबेस या इन मेमोरी डेटाबेस भी बोलते हैं। दैट्स ओनली यूज फॉर अ टेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, व्हेन यू रन इट यू कैन एबल टू सी दीज आर ID 234, these are a description. I take it developer training, developer training, developer training, whether published or unpublished. This is a false, and this is a title. So you can verify that you are getting 3 records, both are same or not. You can able to verify it from here. It's the same records. Is that clear? मतलब गेट सभी को क्लियर है कैसे पोस्टमैन के थ्रू टेस्ट करेंगे? कैन यू पुट इन अ चैट YRN क्विकली? Achna, I saw N. So didn't get you because I think so maybe you have missed in between, क्योंकि मैं कई बार पाया कि आपका कनेक्शन कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। सुस्मिता, you didn't get yes too. uh, okay, I will explain yes too. Yes, sure, I can going to Achna, don't worry about that. You can follow the recording after that, because मैं बार बार same चीज repeat करना, it will be difficult for me because I have to be cover this session within a limited time. So I will again just revise it, but not going to explain from a basic. So what you can do, you can, for you, I'll see that I can separately explain you again in later, but you can follow the recording after on this session as well. So what is the H2 console? What is Lakshya, you want to repeat whole the rest part again or only particular about that get part? Okay, मैं request API जो मैं कर रहा हूँ postman से get का मैं explain करूँगा along with the H2 part. So I can see a lot of question regarding H2. So H2 is just in memory database. In memory database की जैसे आपका Oracle होता है, MySQL होता है, IBM के database होते हैं, those are basically physical database कि आप particular उनको install करते हो. I think you all of guys know the database. Oracle server is a database. IBM का IBM DB2 है, वो database है. Microsoft का MS SQL database है. MySQL database है. These are the database.
I'm also particularly typing it so that you guys can IBM DB2 MySQL Oracle. These are these आर पॉपुलर डेटाबेस. तो अब क्या होता है कि आप जैसे इसमें कुछ चीजें स्टोर करते हो, वो तब तक आपके पास स्टोर रहेंगी जब तक आप उसको डिलीट ना करो. नाउ वी कम विद दैट S2 डेटाबेस. S2 डेटाबेस लाइक टेम्परेरी डेटाबेस है. इट्स एन वर्चुअल डेटाबेस. इसका कोई फिजिकल इंस्टॉलेशन नहीं है. जो भी हम डेटा रख रहे हैं, अगर आप जैसे मान लो एग्जांपल लो MS SQL का या ओरेकल का, तो वो एक मतलब फाइल के अंदर ओरेकल सिस्टम के अंदर स्टोर होता है. यहाँ पे क्या, इट्स पार्ट ऑफ योर रैम. जो आपकी सिस्टम की रैम है, सिर्फ उसी मेमोरी का यूज करता है. अगर जैसे मान लो मैं ये एप्लीकेशन अभी रन कर रहा हूँ, यू कैन एबल टू सी माय एप्लीकेशन इज रनिंग. तो जैसे मैं एप्लीकेशन रन करूंगा, मेरे मेरे पास एक इन मेमोरी डेटाबेस बन जाएगा विच इज पार्ट ऑफ दिस एप्लीकेशन. अगर आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहो तो बेसिकली हम कहते क्या हैं, हम यहाँ पे इट्स यूजिंग J2 JDBC डेटाबेस कनेक्शन एंड वर्क ऑन बेसिकली ओरेकल ड्राइवर, क्योंकि ये जावा और ओरेकल से बाय यूज है. और हमने इसके कंसोल पाथ का नाम S2 UI दिया हुआ है जिसे हम एक्सेस कर पाए. तो बेसिकली ऑन हायर टर्म की जब ये एप्लीकेशन रन करती है तो मेरे पास एक इन मेमोरी डेटाबेस अवेलेबल हो जाता है. जैसे मैं एप्लीकेशन बंद करूंगा, एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, देयर विल बी नो डेटा. बट अगर आप जब एक्चुअल डेटाबेस यूज करते हो, Oracle, MS SQL, MySQL, तो वहां पे ऐसा नहीं होता कि एप्लीकेशन बंद हुआ तो डेटा विल बी गॉन. डेटा विल बी स्टिल देयर. आप एक्सेस नहीं कर पाओगे क्योंकि डेटा एप्लीकेशन बंद है. यही डिफरेंस होता है. इज दैट क्लियर? ओके. एट द एंड आई विल शो यू. मैं एक बार एप्लीकेशन बंद करके दिखा दूंगा कि हाँ, यू कांट एबल टू गेट एनी, यू आर नॉट एबल टू गेट एनी डेटा, कि आपको कोई डेटा नहीं मिल रहा है. तो ये S2 डेटाबेस का पार्ट हुआ. सो गेट पार्ट अगेन आई एम गोइंग टू रिकैप कि जब हमें लिस्ट ऑफ जब हमें रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं, गेट इज फॉर रिट्रीव द रिकॉर्ड्स. तो हमारा जो रेस्ट का मेथड होता है वो गेट मेथड होता है. अगर आप लोग को थोड़ा सा रेस्ट समझने में क्लियरिटी नहीं हो रही है तो स्टिल आई विल से यू कैन गो विथ आवर रिकॉर्डिंग सेशन ऑन यूट्यूब, जो मैंने कल लिया है. आप उसको पूरा गो थ्रू करिए, या पर्टिकुलर उन चीजों को गो थ्रू करिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, सो आई विल अरेंज अ डाउट क्लास जिसमें आप पूछ सकते हो. हमारे रोज का 10 या 15 मिनट डाउट क्लास रहेगा जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. बट प्लीज आई विल अगेन रिपीट यू, एक बार समझने से चीजें समझ में नहीं आती हैं जब तक आप उसको बार बार प्रैक्टिस ना करो. अगर आप समझ भी गए तो भी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है. यू कैन डू द प्रैक्टिसिंग, एंड जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, क्लियर नहीं है, यू कैन गो टू द वीडियो, लिसन 1 or 2 times. फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, यू कैन आस्क इन योर डाउट सेशन. बट प्लीज डायरेक्टली डोंट आस्क इन अ डाउट सेशन, बिकॉज आपने वो सारा कन्वर्सेशन मिस किया हुआ है या आपको नहीं समझ में आया है. तो दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन. एंड अगर आपको लिंक्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो एट द एंड ऑफ दिस क्लास आई विल अगेन शेयर दैट यूट्यूब लिंक्स वेयर वी आर अपलोडिंग आवर वीडियोस. और उसमें आगे और भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी हम इंटर्न्स के प्रोग्राम्स हैं, जो भी हमारे असेसमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं, इवन दो जो भी जॉब रिक्वायरमेंट्स की डिटेल्स है, वी विल स्टार्ट पोस्टिंग फ्रॉम देयर एंड एक्सप्लेनिंग इट. ओके, सो मैं अगेन आई एम कमिंग बैक टू टॉपिक कि ये हमारा एक रेस्ट एपीआईज है जिसकी हमने रेस्ट एपीआई, इसको हम एंड पॉइंट बोलते हैं. दिस बेसिकली वी कॉल्ड HTTP लोकल होस्ट 8080. ये लोकल होस्ट 8080 क्योंकि मेरे लोकल मशीन से है. 8080 इज अ पोर्ट. सो मैं और भी बेसिक से समझा रहा हूँ कि इट्स माय सिस्टम, दिस इज माय सिस्टम एप्लीकेशन पोर्ट. एपीआई ट्यूटोरियल्स इज एन एंड पॉइंट. जैसे कल का गिटहब का याद होगा, राइट? github.com/api/user. सो github.com इज अ सर्वर हो गया. तो ये लोकल होस्ट जहाँ या सिस्टम हो गया जहां से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो. तो ये मेरा सिस्टम हो गया. और ये 8080 पोर्ट हो गया. एपीआई ट्यूटोरियल्स इट्स नोन एज एन एंड पॉइंट, और टोटल को हम रिसोर्स एंड पॉइंट बोलते हैं इस कंप्लीट यूआरएल को. मेथड मेरा गेट है क्योंकि मुझे इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है जो भी डेटाबेस में. व्हाट आर द ट्यूटोरियल्स इनसाइड. मेरी कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन है. आई वांटेड टू सी अ रिस्पांस इन जेसन फॉर्मेट, सो मैंने एप्लीकेशन स्लैश जेसन कर रखा है. इट विल बिकम पार्ट्स ऑल द इंफॉर्मेशन इनटू जेसन फॉर्मेट.
और जब मैं इसको सेंड करूंगा तो यू कैन एबल टू सी स्टेटस 200. आई एक्सप्लेन यू दैट व्हाट आर रेस्ट स्टेटस कोड. तो ये होते हैं रेस्ट स्टेटस के कोड, जिसको हम HTTP स्टेटस कोड भी बोलते हैं. यू कैन सी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स फॉर सक्सेसफुल HTTP रिक्वेस्ट. तो 200 आपका तभी आएगा, या 200 की सीरीज तभी आएगी जब आपका सक्सेसफुल ऑपरेशन हो. जो ड्यूरेशन लगा इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस होने में और रिस्पांस पाने में, वो 48 मिली सेकेंड का है. Here you can see connection is keep alive content type application JSON. So यहाँ पे आप basically you can see some other details which is a part of headers, जो कि आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल के लिए नेसेसरी होते हैं, TCP IP के लिए जरूरी होते हैं, वो डिटेल्स यहाँ रहते हैं. Sometimes it's required in your testing to get few things, but not always. So main and key important things that कि आप सारे वो records पा रहे हो या नहीं जो कि database में है, and that you can able to verify it from the database part from here. So get is clear. और ये भी मैंने बताया कि इसका मतलब ये है विद इन डबल, आई मीन विद इन अ बिग ब्रैकेट, कि ये आपका लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स आएंगे. इट्स एन लिस्ट एक्चुअली. So guys, हम basically after every 40 minutes we took a break of 5 or 6 minutes, strategy break, you can understand. So uh, what's the time? Just 1 second. So it's going to now for 40 minutes, and I will say let's go on a break for now, and let's back at 13:45. 1:45, let's back to understand the other rest method, post, put, create and delete. So हम बाकी अदर जो रेस्ट के मेथड है वो परफॉर्म करेंगे, वो वेरीफाई करेंगे, and I will explain the other basic things into that part, and also I will try to cover microservices as well. Okay, so 1:45 पे फिर से मिलते हैं.